एक लेटर आया था और उसकी मदर ने उसको किस तरह से कन्वे किया था वो मैसेज, अगर वो मैसेज उस वक्त कन्वे नहीं किया जाता कि वो लेटर आया था कि आपका बच्चा इस काबिल नहीं है, और उन्होंने कहा था कि अपने बेटे से उसको रिप्लाई में कि आप इतने काबिल हो बेटा, आपका और ये स्कूल का कुछ इस तरह से लिंक है कि आपकी क्वालिटीज और ज्यादा हाई हैं, तो वो आपको नहीं ले सकते। एडिसन वहीं पे ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट होकर उसने अपने काम शुरू किए, और अगर वो उस वक्त लेटर उस हमारे वाले पेरेंट होते और जाके उसको छाड़ते और क्या किया बेटा ये तुमने, और फिर वो टीचर से कि हाँ सही कह रहे हैं आप, जरा इसमें ठीक करें इसको, ये क्वालिटी नहीं है इसमें, तो वो क्या रिजल्ट आता हमारा। एनीवेज, waiting for, desperately waiting for our panel discussion. So we will move to our panelist. Yes, Miss Nazia Shahbaz, over to you. Yes, exactly. So finally, this is the time for panel discussion, and we have invited 3 honorable panelists here. The first one is Sir Abbas Hussain, well-renowned, and he is Master Trainer and Director of TDC. And our second panelist is going to be Madam Kamal Fawad, and she is a diverse professional having more than 17 years of experience in the education and development sector. She is ISO certified lead auditor, education consultant, and trainer. She is the founder of Teach Learning Dimension also, and initiated a platform named Parenthood. And our third guest is going to be Sir Shehzad Jiva, and he is the director Aga Khan University Examination Board since 2014 and holds a joint appointment as an assistant professor of Faculty of Arts and Sciences, Aga Khan University. He is a strong advocate of quality education and assessment. In 2022, Dr. Jiva was appointed as chairman of Interboard Committee of Chairman IBCC by the Ministry of Federal Education, Government of Pakistan. So now I would like to invite all these panelists, over 2 panelists. And yes, our moderator, Miss Kamal, Miss Iram. Thank you so much, Nazia and Shumaila. Yes, she will moderate this panel. Yes. Oh, yes. Thank you so much, Shumaila and Nazia. I welcome my distinguished guest over here. MashaAllah, such learned people today. And I'm really excited to host them for this panel discussion. Dr. Shehzad Jiva, I welcome you. Ms. Kamal Fawad and Sir Abbas Hussain, my trainer and my mentor. It's so good to see all over here. And Ms. Samreen Naz ने ज़रूर बहुत सारे तारे हिला दिए हैं, और मैं भी इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ जो तमाम बातें आपने की, और आई थिंक कि सेमिनार के स्टार्टिंग से अभी तक यही था जो मिसिंग था। एंड अगर 10 लोग भी चेंज लाना चाहें तो इट्स नेवर टू लेट, एंड लिटिल एफर्ट्स एड अप टू बिग रिजल्ट्स, नो डाउट। So I welcome you all to this panel discussion. I hope कि इसमें जो बातें होंगी वो आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएंगी, और आप अगर उन रास्तों पर चलेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, मिस समरीना ने जैसे कहा, तो हम कोई वजह नहीं कि हम चेंज नहीं ला सके। कल डे 1 था, और डे 1 पे हमने बहुत सारी बातें की, ऑनलाइन टूल्स पे डिस्कशन हुए, एवेल्युएशन के तरीकों पे बात हुई, और आज जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं उनका फोटे ही यही है। So inshallah we'll be learning a lot on different questions. सबसे पहला सवाल जो मैं सर जीवा से पूछूंगी, sir, my first question to you is, what is the basic difference between assessment and test? बहुत सारे लोग समझते हैं ये एक ही चीज है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इसमें फर्क है. So would you like to elaborate a little bit? Is there any difference between assessment and test? If it is, then I would like you to please elaborate on it. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो वेरी मच. Day 2, another exciting day. Day 1 was amazing. So coming to your question regarding difference between test and
assessment. It is interlinked with each other. If we talk about assessment, the purpose of the assessment, the goal is to basically reach out for the improvement and not only to make to make judgment. So, assessment is a process where you document, you record the knowledge, the skills, the attitudes and beliefs, usually in measurable terms. However, when we talk about test or evaluation, it is basically for the purpose of making a judgment on a certain criteria. For example, we have our curriculum, and we expect in 1 year, for example, in grade 9 and grade 10th, they give examinations and they're supposed to complete a certain curriculum to be able to be promoted to the next level or completing the secondary school qualifications. So that process is basically evaluation or testing that is done. So that's it's basically interlinked, how you use it, what is the purpose of it. So yeah. All right. The next question I would like to ask to Ms. Kamal, that how can we measure skills during a testing process or an assessment or an observation? कल हमने ये बात भी की कि life skills बहुत important हैं और बच्चे अभी समरीन ने भी ये कहा कि बच्चे robots बन गए हैं because we are taking them through the process और हम उस process से उनको गुजार के इस तरह से लेकर आ रहे हैं कि वो robots की शक्ल में आ रहे हैं. But now the world is changing and we are again talking about the 21st century learning skills और हम creativity की बात करते हैं, हम empathy की बात करते हैं, हम life skills की बात करते हैं. But is there any way we can assess life skills? क्या कोई ऐसे तरीके हैं? Thank you, Ira. Thank you, Sumaila, for giving me this opportunity. बिल्कुल ऐसी बात है जब हम बात करते हैं 21st century learning की, जब हम बात करते हैं. मिस कमल, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपना माइक क्लोज करें ताकि हम आपको अच्छे से सुन सकें. Am I audible now? Yeah, it's better. It's better. Thank you. So, जब हम बात करते हैं 21st century learning की, जब हम बात करते हैं बच्चों के skills development की, और जैसे कि अभी हमारा सेशन खत्म हुआ जिसमें हम life skills पे फोकस कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो definitely उसको कैसे measure किया जाए, उसको कैसे assess किया जाए, it's a difficult task but not very difficult. It's a technical task basically. तो होता ये है कि skills को assess करने के लिए हमें process evaluation पे जाना पड़ता है. Sorry to interrupt you, Miss Kamal. जी. You are not audible clearly. Kindly close your mic. Yes. Is this fine now? Much better. Much better. Okay. Okay. So I have to keep this mic close to me. Okay. So when we are talking about 21st century learning, तो जब हम स्किल्स की बात करते हैं कि बच्चों के अंदर आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उनको क्रिएटिविटी उनकी है, इन सबको हमें एनहांस करना है, तो क्या होता है कि हम प्रोसेस इवैल्यूएशन पे फोकस कर रहे होते हैं ज़्यादा. जो असेसमेंट हम की बात अभी डॉक्टर साहब ने कही कि असेसमेंट्स जो हैं, जो ऑन गोइंग होता है, जो हम प्रोसेस के दौरान, जब टीचिंग एंड लर्निंग के दौरान में हम बच्चों की ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उनको ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसमें उनकी डिफरेंट स्किल्स की एनहांसमेंट के लिए बात की जाए, और ड्यूरिंग दोज टास्क वी ऑब्जर्व देम ऑन डिफरेंट इंडिकेटर्स जिससे हम ये मेजर कर सकें. तो स्किल्स को मेजर किया जा सकता है, असेसमेंट्स के थ्रू बहुत आसानी से मेजर किया जा सकता है, और ये प्रोसेस इवैल्यूएशन का हिस्सा होता है. ठीक है. Thank you so much, Ms. Kamal. And again, you were talking about the process. कि जिस process से हम उन्हें गुजार रहे हैं, अगर हम content से ज़्यादा process पे focus करें और content base की बजाय process base पे जाएं. Yes, sir. Jiva, you want to add something? Welcome, sir. Welcome, sir. Abbas Hussain. So happy to see you. Achha, sir. Yes. So I totally agree with Ms. Kawal, and she's absolutely right. And it is technical and it is measurable and you can assess it. But when she mentioned about 21st century skills, for example, creativity is one of the 21st century skills, and it's not very easy to measure on paper pen, based. You can, it has its own approach, but another way is also doing observation and using rubrics
But for that, you need a certain platform which a student must go through, and teachers uses those rubrics to use their observation to measure the skills, the 21st century skills of the students, which can be leadership quality as well, which is itself a 21st century skills. Information gathering is also a part of 21st century skills. So yeah, you can do it by paper and pen as well, which is more complex, but a better way is also through observations. And I think, sir, we can have some keys like जिस तरह समरीन ने कहा कि grade 5 तक हम assessments को formal assessments को avoid करते हैं, तो most of the schools have developed keys also, like you know it's emerging या भी कहाँ किस level पर है, तो that is also a safe way कि आप जिसमें 3-4 levels रख लें, and there you can give provide them of constructive feedback also ताकि उनकी improvement भी हो. Assalamu alaikum, sir, how are you doing? Walaikum salam. Apology for a little hiccup. I'm in another place, but good to see you, Dr. Saab. Dr. Shehzad Jiva, good to see you. Kamal Fawad. Hello. How are you? Hello, I'm sir. good. Assalamualaikum. Wa- Thank you so walaikum. much for joining us, sir. Thank you. Thank you. जी. Yes, Ms. Iram, जी. यही question I want to अच्छा, add, ऐसे भी पूछ. Dr. Abbas. जी, जी. Yes. जी, सर अभी आपके ज्वाइन करने से पहले हमने बात की कि लाइफ स्किल्स को क्या हम असेस कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे. जैसे हम कंटेंट को तो असेस करते ही रहते हैं, वही सारा फोकस रहता है अनफॉर्चुनेटली, बट हाउ टू असेस द लाइफ स्किल्स. सो वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन इट? जो अभी तक की बात कही गई, I was listening, even though I was not visible. I agree absolutely. बिल्कुल, यानी इसका short answer तो yes है. मैं समझता हूँ, let us step back a little. Parents who hit their children do so because they were hit when they were young. ये एक जिंदगी का अफसोसनाक कुलिया है कि हम वही दूसरों के साथ करते हैं, नई नस्ल के साथ, जो हमारे साथ हमारे लिए पीछे हुआ होता है. इस वक्त I don't see the children a problem. I don't see life skills a problem. I don't see the assess. I see the problem in me, in the teachers. क्योंकि जिंदगी में कभी मेरे लाइफ स्किल्स किसी ने असेस नहीं किए, ना परवाह की, ना पूछा, और मैं इतना कुछ टेबल पे ला रहा था, लेकिन टीचर को सिर्फ फिक्र थी पेपर पेन निशान लगाना, मजमून लिखना, करिकुलम को रीगर्जिटेट करना, और बिकॉज वो मफरूजा अंदर से निकालना इंतहाई मुश्किल काम है. मैं जितनी चाहे लाइफ स्किल्स के नए पैराडाइम दे दूं, वो उस्ताद कन्विंस ही नहीं हो रही हैं कि मुझे अब ये नया काम करना है. तो आई एम सैडन्ड बाय एंड देयरफॉर होपफुल by the opportunity that this pandemic has given us. The pandemic has given us a chance to wipe out silly practices, stupid stuff that we did just because we were doing it. And now we have a chance to do things new. And therefore, a creativity का challenge है. मैं अभी से बता दूं कि दुनिया के दूसरे जो scholars हैं, वो already मायूसी में जा चुके हैं. They are already upset that we are trying to bring the same thing before the pandemic back again. And I cannot imagine anything more regretting, यानी more disgusting. But sadly, अगर हम ये moment उठा लें और कोई नई चीज की तरफ करें, तो ये क्रिएटिविटी के इम्कानात में, और यकीनन एक मेजर पॉइंट लाइफ स्किल्स का असेसमेंट होगा, जिसके पैराडाइम्स अवेलेबल हैं, जिसका यानी वो एक अलग बात है, लेकिन पहले हम अंदर से एक रजामंदी तो लाएं. थैंक यू. Thank you so much, sir. And I agree to you, as you said that you are saddened that हम जो ट्रेनिंग का कल्चर देते हैं, जब जाहिर है आप टीचर ट्रेनिंग में आप भी हैं और मैं भी और हम सब ये काम करें, तो टीचर ट्रेनिंग में बड़ा अफसोस होता है कि 16 इयर्स की एक फॉर्मल कंप्लीट एजुकेशन करने के बाद आप बैठे होते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की ट्रेनिंग में या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग में, जो कि बेसिकली स्कूल का काम था कि वो सारी तमाम स्किल्स आपकी कंटेंट के या नॉलेज के साथ साथ वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी करता आपकी,
बट अनफॉर्चुनेटली हमें इस तरह की ट्रेनिंग्स देनी पड़ती हैं और लोग लेते हैं आके, क्योंकि ये एरिया उन्हें भी पता है कि उनका वीक है, बट दे कांट हेल्प इट बिकॉज दे हैव बीन थ्रू द सेम प्रोसेस. जी. Thank you so much, sir. जी sir, you want to add something? No, please Okay. continue. So next question that I have for all three of you, whoever wants to answer, कि MCQs की क्या value है when it comes to all grade levels, और MCQs को plan करते वक्त जब हम assessment के लिए plan करें तो what points to be taken in consideration कि MCQs बराए MCQs plan किए जाएं, या उसमें भी कुछ हिकमत है, या उसमें भी कोई logic है, या कोई pattern, कोई तरीकेकार है कि जिनका ध्यान रखना जरूरी है. Whoever wishes of you wants to take the lead. Being coming from the examinations, जी. so Abbas साहब मुस्कुरा रहे थे. So yeah, so I think MCQs, there are multiple tools to assess students. Yeah. One of the tools is MCQs. MCQs. There was a time when fill in the blanks used to be used as one of the tools to assess students' knowledge. But now, these days, MCQs is supposed to be the best tool, one of the best tools to assess students, and the fill in the blanks approach is termed to be not a very good approach. And then, and we are all wired in such a way that we are very good in fill in the blanks, because as a child, we used to be bombarded with fill in the blanks, and we had to guess. So one thing is clear in terms of the best international practices for assessment is one of the ways is MCQs. There is a myth that you cannot assess higher order thinking of a child through MCQs. That is completely wrong. You can assess higher order thinking of a child through MCQs. Take GRE or SAT's test, you'll get to know as well. And then what you need to look into when you are developing MCQs, which is a very technical approach. Just few of them I'll just highlight. I won't take much of the time. I'll request other panelists to talk on those as well. One of the areas is, you can either have four options with one best response, or five. 3 का भी होता है, 2 का भी होता है. But the standard practices that is used is having 4 options with one best MCQs. It is a good practice to have a scenario-based MCQs rather than just stating something and expecting students to choose one of the right options. The kind of options that you make is something that is very important as well. You can make it as simple and easy for the students to predict what is the right answer, or you can make it more complex by making sure that the options that you're giving is such that is not easily the right answer is not easily being taken. Once you are done with the MCQs, the next step we can talk later is about how do you evaluate, for us as an examination board, when we get scores of the students after scanning the OMR sheet of the MCQs of all the students across Pakistan. How do we ensure the reliability and validity and the fairness of the scores? Coming to the fairness part as well, when you develop an MCQ, you need to ensure fairness. Fairness, how do we bring it? In Pakistan, we've got multiple ethnicities, we've got urban, rural areas. Just to give you one example, once in our own AKU examination board's exams, one of the questions which was given had a scenario of a shopping mall. And we realized after looking at the scores that the students in the most rural and remote regions were unable to respond because they did not have the concept and they had never seen
uh, uh, a shopping mall in their life. So how you develop a question is to ensure that the entire body of the student or the representative body of the students are able to comprehend. For another example is English language. English is not our first language, not our mother tongue. So if the questions are written in such a way which is more advantageous for students whose first language is English, or who comes from a resourceful family where English is spoken, then you bring a disadvantage to those students whose first or even second language is not English. So how do you ensure fairness while developing MCQs is also very important. I'll just stop over here and over to the other panelists. Ms. Kamal, would you Right, like Ji. to add something, or Let us hear Kamal, because I'm going to go on a different tangent. Ji, Kamal. बिल्कुल सर, मैं दिवस आपकी बात को आगे लेकर जाऊंगी कि MCQs the way we are developing वो हमें बताता है कि how what we are assessing. If we are assessing only knowledge and if we are assessing the skills. So जो STEM हम बना रहे होते हैं, जो MCQs हम डिजाइन कर रहे होते हैं, it is very important to keep in mind कि हमारे MCQs जो हैं वो skills को कैसे assess कर रहे होंगे, वो conceptual understanding को कैसे assess कर रहे होंगे और कितने higher order questions हम बना सकते हैं. And again the options which we are giving to them, if the options are in a way they can choose, pick and choose, the options are, the answer is very clear. So definitely फिर वो MCQ जो है वो हमारा उसका जो score है, जो उसकी जो weight है, weightage जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता. जबकि अगर MCQs में आपके difficulty level को मद्देनजर रखा जाए, keeping in mind again keeping in mind the situation, keeping in mind the areas and ability of all the students, those are appearing in the examination from different areas and from different school systems. तो उस वक्त फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो रिजल्ट्स हैं वो कितने वैलिड और रिलायबल. तो मेकिंग एन MCQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर फेयरनेस को जब कंटिन्यू करते हैं और उसके वेटेज का ख्याल रखते हैं, तभी हम उसकी बेहतर इवैल्यूएशन एंड ऑफ द टर्म कर सकते हैं और रिजल्ट्स एनालिसिस कर सकते हैं. Right. Thank you so much, Ms. Kamal. Sir, would you like to add anything, sir? Yes, I would like to respectfully disagree with anyone at all on the planet who thinks that MCQs are good. I belong to another school of thought. दो तीन बड़ी simple सी बातें. Number one, for each MCQ that you have a STEM and 4 choices, you are exposing the child to 3 wrong answers to each correct answer. Now, nobody on earth can tell me that exposing a child to 3 wrong answers to 1 correct answer is a wonderful thing for learning. So I consider MCQs to be an administrative issue rather than a pedagogic benefit. In the real world, no human being has ever learned anything by 3 errors and choosing 1 from them. Only the correct thing has been learned. Ye big subject hai, it's a philosophical view, but I know that administratively, computerized marking and checking are only possible when you have a sheet of paper with all the pencil marked zeros and you zap them through the sheets. So to my mind, the entire conversation on life skills, higher order skills, factual skills are fake. Multiple choice questions do not and will not serve a pedagogic purpose, but they are there if we want to test 100,000 people. I can't make 100,000 people write an essay and have people mark it. I know that's not possible. So I do know that administratively, I need to have, therefore, GMAT, therefore, by the way, GMAT and SAT and others are not good examples because they are taken normally when people are mature adults. So I'm talking about grades 1 to 8. Grades 1 to 8 only. I'm not even talking about 9th and 10th. I believe that grades 1 to 8 can use multiple choice questions
for pedagogic purposes like this. The teacher brings, if they are available in print, wo bhi theek hai. Bring them to the class and you ask each child to first say, why are the wrong choices wrong? Wrong. Yani, logically tell me there are 3 distractors and 1 correct answer. That is true. I don't want to know only the correct answer. I also want to know why the distractors are wrong. Now, when the children in conversation work out the logic why in physics, in maths, in English, in science, in Islamia, why that answer cannot be possible, the learning is enormously gained. So I'm now talking about using multiple choice questions as a resource for teaching by turning the purpose around. And for testing, I accept the fact that if I want large numbers of people to be tested in a way that is administratively easy, MCQs are a necessary evil. But that's it. That's it. Like so many other things. I know, Shahzad sir. Like so many things, like load shedding, like COVID-19 pandemic, like other things that have destroyed our lives and continue to impact us. We take this as a reality in the system and we negotiate through it. But we must understand what the shadow side is. Ji, Dr. Abbas साहब, इसमें you mentioned about the MCQs. I earlier said that you need to have multiple tools for assessing. It is true. Second is why I would favor MCQs. Of course, not only MCQs, there has to be multiple tools. But the advantage of MCQs over CRQs, constructed response questions, or extended response questions, is that you can evaluate multiple concepts through MCQs, or more concepts in MCQs as compared to CRQs and ERQs, just from a point of view of an examination or a test which a teacher takes after every, like at the end of the year. It's a 2 hours or 3 hours exam. Exactly. And if you go for CRQs and ERQs, which has marks or weightage allocated for one concept, 2 marks or 4 marks or even 10 marks. And with one MCQs, you can, measure multiple concepts. So there are administrative advantages. Exactly. As well to it. Having said that, no one single tool should be used only, but that's to measure a student's ability. That's, thank you. We now agree. Exactly. So, very nice, very nice, sir. Very nice. What a beautiful disagreement, sir, because this is what we need, that we need to disagree at points and we need to bring the discussion in. So that's the beauty of this discussion. And I have reached to a conclusion and through this that Shumaila, you want to add something about medical exams? What about MDCAT? And this is all. No, just a moment. I have very clearly said that any exam I take after the age of 18. Right. Any exam I take as a mature adult, the paradigms change. Right. My capacity to process information changes. And by the way, no human being is told to haru-bharu sit in MCAT. Only those who choose to do so. But grades 1 to 8 is universal for all children. Right. Whether they come from Gulistan-e-Johar or Gulshan-e-Iqbal or Liari or. When you have that kind of a system, MCQs have in them a serious inbuilt problem. But MCAT and all GMAT and SAT and all that are irrelevant because I sit in them when I'm mature and I have a knowledge base of a different scale altogether. So the comparison doesn't work. Right. Same with TOEFL, same with all the others. All it doesn't work.
Yeah. So we can see MCQs is important, different criteria. And I would say, sir, कि जब बहुत सारी टीचर्स की जो एक जिम्मेदारी होती है, उसमें ये भी होता है कि कौन इतने सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस चेक करेगा, इतनी क्रिएटिविटी को कौन असेस करेगा. बट यू आर एब्सोल्युटली राइट. इफ दे आर हैविंग अ क्लास ऑफ 25 चिल्ड्रन और से 28 चिल्ड्रन भी चले अगर है, तब भी आप कम से कम यू कैन हैव अ प्रैक्टिस वंस इन अ वीक या वंस इन 15 डेज कि आप व्हाई तो पूछें. आस्क फॉर द रीजंस ऑफ व्हाटएवर दे आर डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग सो. तो हम उस एमसीक्यूज के प्रोसेस को आगे बिल्कुल लेके जा सकते हैं और उसको वहीं नहीं छोड़ देना चाहिए. आप जब अपनी वर्कशीट्स चेक करती हैं, बिकॉज यू नीड टू सेव टाइम, यू नीड टू असेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी अग्री, लेकिन आप उससे ये एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं दैट वंस यू चेक, so you can ask an open-ended question to your class the next time कि मैंने ये रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा देखा, क्या इसकी वजह है, कोई बताना पसंद करेगा? तो मे बी यू कैन हैव अ लेस टाइम में आप ये डिस्कशन कर सकते हैं. जैसे कल मैंने क्विज़ेस. जी सर. Okay, Iram, in the research जो documentation गुजर रही है, there are teachers who have a practice. जी सर. That as soon as the exam is over and the last child has handed in the sheets, जी. the teacher has given the correct answer to the people, to the children. I'm talking about, let us be very clear, I'm talking about grades 1 to 8. Right, I'm sir. talking about in school where the teacher knows every child. I'm not talking about a national exam system. I'm not talking about those. The logistics are too great, and I agree, Yeah. Doctor. If I want to do something, I need to do something which is feasible. I understand, not the issue. So if there are 28 children and I have taken the MCQ part of the exam and they have submitted it, at that very moment, half an hour, I turn the question paper open and say, let's discover why the 3 wrong choices were wrong. Yeah. And that moment of learning is so powerful that the children never get it wrong in the actual exam that they give, inshallah, when they do. So I have, as part of my contribution today in the panel discussion, I have given teachers a resource that if you have a book containing MCQs already printed, please don't only use them for the correct answer. Use them as a teaching resource for discussion and pulling out, and you will find that the learning gains are much greater. So in a very humble way. All the other issues, yeah, mashallah. Good luck. Ji, I see Kamal's hand. Yes, Miss Kamal, you raise your hand. जी जी मिस कमल. इसीलिए मैंने अपना हाथ रेज किया था बिकॉज एज यू हैव मेंशन्ड इरम कि टीचर्स यूज टू हैव कि जी इतने सारे बच्चों का काम कैसे चेक किया जाएगा और एमसीक्यूज बनाए जाए और उनको चेक कर लिया जाए. दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स कि हमारा मकसद ये है कि हमारा काम जल्दी से खत्म हो जाए. हमारा मकसद बच्चों को असेस करना नहीं है. अगर हम बच्चे को असेस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ बेटरमेंट एंड लर्निंग, तो हम हमेशा जैसे बात की अभी अब्बास साहब ने कि हम वाई पूछेंगे. अगर गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है. अगर आप कह रहे हैं कि ये सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है. देयर मस्ट बी अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, वेदर वो आधे घंटे के बाद हो या अगले दिन हो, बट देयर मस्ट बी सम डिस्कशन ताकि उसके ऊपर बच्चे जो हैं वो सोचना शुरू करें. व्हेन द पर्पस इज जस्ट टू हैव एन एग्जाम और उसके रिजल्ट्स, तो फिर वो एमसीक्यूज हो या सीआरक्यूज हो या ईआरक्यूज हो, उनका पर्पस नहीं रहता, उनकी इफेक्टिविटी नहीं रहती, इफेक्टिवनेस नहीं रहती. राइट. एंड सर अब्बास, व्हाट अबाउट आवर कल्चर? अरे आपने अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, हमारा कल एग्जाम है और रिजल्ट कॉपीज. ठीक है, देखिए जी, इस कबील की चीज के लिए तो मेरा एक बड़ा शॉर्ट आंसर है. पैंडेमिक के 24 महीने के बाद February has started. So we are back to February lockdown 2020 and up 22 hai. Now people have realized that the issue is not the curriculum, the issue is not, the issues are life skills, the issues, bachon ki well-being was considered low priority. It has now become the first priority. And teachers realize this. Teachers ki apni well-being bhi ab priority hai. So some of this discussion is now becoming low. Only, let's say, very, very few. As I said, world में लोग मायूसी की बातें कर रहे हैं कि we are bringing that same old thing back when we shouldn't. Parts can be easily wiped out and clean. ठीक है, but बात आपकी सही है. इसको बहुत ज़्यादा परेशान ना हो. Things are improving and they will improve some more. मैंने देखा डॉक्टर साहब ने हाथ किया.
जी सर। My question was to Iram to repeat the question again. Maybe I had heard the question wrong. Probably your question was how we can make a good MCQs. Yeah. So जी सर, क्वेश्चन यही था, बट ऑफ कोर्स पैनल डिस्कशन में डिस्कशन ऐसे ही होता है कहीं से कहीं, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन दैट वी ऑल हैव ओपिनियंस। सर क्वेश्चन यही था कि एमसीक्यूज किस तरह का टूल है हर ग्रेड लेवल पर, और उनको कैसे डिजाइन करते हुए किन चीजों का हमें ख्याल रखने की जरूरत है। तो आई थिंक काफी उस पर बात हो गई, काफी आइडियाज मिल गए हमें कि क्या चीजों को हमें देखना है। और यहाँ पे मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंची, तो मुझे ये लगा कि इसी तरह हम क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्हांस करेंगे। अगर हम वाई पूछना शुरू कर देते हैं इन एनी वे, तो वही जो क्रिटिकल थिंकिंग को हम इन्हांस करने की फिक्र में है, तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। और टीचर्स नीड टू, ऑफ कोर्स दे नीड टू रीविजिट देयर अप्रोचेस, दे नीड टू रीविजिट देयर माइंडसेट्स, कि आप किस माइंडसेट के साथ काम कर रही हैं, कि आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आपकी ट्रांसपेरेंसी आपके साथ है, या अगर क्लासरूम में कैमरा लगा है तो आप उसकी फिक्र में सही काम करती हैं। तो अगर आप इन द ट्रू सेंस इवैल्यूएट करिए, जो कि एक बहुत भारी जिम्मेदारी है, अगर आप उसको ट्रू सेंस में करने जा रही हैं, तो ऑफ कोर्स यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा बहुत बीच में आ गया है। My next question was, how can we improve the education system at the primary level and at secondary level? तो उसमें कुछ चीजें हमने भी डिस्कस की प्राइमरी के हवाले से। Now, all three of you would like to add anything specifically कि अगर हम प्राइमरी लेवल्स की बात करें और अगर हाई स्कूल सेकेंडरी लेवल्स की बात करें, तो what measures do you think we need to take as parents, as teachers, as administration, wherever you want to highlight the gaps? Ms. Kamal would like to start क्योंकि आपका तो forte ही यही है। Yes, please go ahead, Ms. Kamal. आपके क्वेश्चन की थोड़ी सी क्लैरिटी के बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जी आप सिर्फ इसको टेस्टिंग के इवैल्यूएशन के हवाले से कह रहे हैं या ओवरऑल प्रोसेस के हवाले से बात? नहीं, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के हवाले से। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे टेस्टिंग और इवैल्यूएशन को प्राइमरी ग्रेड्स में और एलिमेंट्री ग्रेड्स में किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल हमें अपने प्रोसेस इवैल्यूएशन को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं जब भी बात करती हूँ, हम प्रोसेसेस के दरमियान ऑब्जर्वेशंस को, रूब्रिक बेस्ड ऑब्जर्वेशंस को फोकस नहीं करते। हम प्रोसेस के दौरान सॉरी मिस कंवल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, काइंडली क्लोज योर माइक। आवाज के साथ प्रॉब्लम हो गया, हम आपका कोई पॉइंट मिस नहीं करना चाह रहे। जी यस, तो अब ठीक है जी, परफेक्ट है जी। सो इन माय ओपिनियन, जब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट आउटकम्स में जब भी आते हैं जब हमारे इनपुट्स बेहतर होते हैं और इनपुट्स हमारे ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में जाते हैं और उनको हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करके उनके ऊपर इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अप्लाई करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर टेस्टिंग और हमारे बच्चों के आउटकम्स को इम्प्रूव करें, तो बेहतर है कि हमारे जो इंटरनल इवैल्यूएशन सिस्टम्स हैं, जिसमें कि हम प्रोसेस इवैल्यूएशन की बात करते हैं, रूब्रिक बेस्ड इंडिकेटर्स की बात करते हैं, हमें इस अप्रोच को अपने क्लासरूम्स में लेकर आना चाहिए है। क्लासरूम्स में सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके और उसके बाद उसका एक रिफ्लेक्शन लिख के कि जी ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है, इट्स नॉट द केस। अगर स्किल्स को इम्प्रूव करना है, आउटकम्स बेहतर करने हैं, तो क्लासरूम में टीचर को क्रिटिकली एक तो जो लेक्चर डिजाइन कर रही है उसमें वो कितने स्किल्स को असेस करने जा रही है, बिल्डअप करने जा रही है, और फिर कैसे उसको वो असेस करेगी, उसके रूब्रिक्स होने बहुत जरूरी हैं। इट्स अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो डेफिनेटली ये बगैर रूब्रिक्स और इंडिकेटर्स के, टूल्स के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे टीचर्स को इन टूल्स की समझ होना, इनके स्केल्स की समझ होना, इनके रूब्रिक्स की समझ होना जरूरी है, फिर ये अप्लाई कर सकेंगे अपनी क्लासरूम्स के अंदर और फिर हम आउटकम्स को बेहतर कर सकेंगे। वेदर वो हम किसी भी टूल के तहत आउटकम्स ले रहे हों, टेस्ट हमारे किसी भी मेथड के थ्रू हो रहे हों, वो आइदर आप एमसीक्यूज की तरफ जा रहे हों या आप सीआरक्यूज और ईआरक्यूज को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आप एनुअल टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, आप मिड टर्म में भी लेकर जा रहे हैं, कुछ भी लेकर जाएं, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बेहतर है, जरूरी है कि हमारा प्रोसेस इवैल्यूएशन बेहतर। जी, थैंक यू सो मच। जी सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैं तो रेडिकल, आई गो फॉर रेडिकल चेंज। न लो कोई भी इम्तिहान कभी भी किसी बच्चे,
8वीं जमात तक सिरे से, मिड टर्म को तहजीज़ व तकफीन कर दो, फाइनल एग्जाम खत्म कर दो, मंथली असेसमेंट अल्फातिहा मत लो, कोई भी एग्जाम न लो, पढ़ाओ फॉर गॉड सेक, teach them this beautiful thing called language, this beautiful thing called stories. Teach them numeracy. Teach them the joy of numbers and the pleasure it takes to discover patterns within symmetries and the tables. Take as long as you like. Forget the cassette exams and the setting of papers and the marks and turning human beings into numbers. That is what people do in prison. जेल एक वाहिद जगह है जहां इंसान नंबर में तब्दील होता है, या इम्तिहान का निजाम जिसमें बच्चे के नंबर तब्दील हो जाते हैं कि मैं तो 7 हूं, बच्चा खुशी से कहता है क्लास 3 में मैं तो 7 हूं, अच्छा तू 8 है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं देख लूंगा. Cut out this entire fiction. I'm a great one for not taking any exams at any time for any purpose at all. And then अब है तो फिर जी तो फिर उसका जवाब यह है जी, actual literacy skills. What is the reward of good deeds? The opportunity to do more good deeds. What is the reward of reading? More reading. लेकिन आज हमारी रीडिंग टेस्ट के नतीजे में बच्चा रीडिंग से ही फारिग है. वो कहता है खुदारा मजीद किताब नहीं पढ़नी, मुझे मेरी जानकारी है, इसका प्लॉट बताओ, मेन आइडिया बताओ. लाहौर जब कोई चीज लुत्फ के लिए न रहे, अपने मजे के लिए न रहे, अपनी जिंदगी के लिए न रहे, हर चीज नंबर के लिए, मार्क्स के लिए रहे, हर वक्त मुझे कोई दूसरा इंसान कहता रहे कि मैं अच्छा हूं, तब मैं अच्छा हूं, तो मैं अपनी नजरों में कब अच्छा हूं? तो वो ऐन जिंदगी के बुनियादी 14 साल, एज 0 to 14, 15, by the time a child is in class 8, वो ऐन वक्त है बच्चे की सेल्फ एस्टीम डेवलप करने का. हमने इम्तिहान का निजाम इजाद करके उसका सत्यानाश करने का तरीका निकाल दिया. आपको 9वीं और 10वीं में इम्तिहान लेने, ले लीजिए, आपको O लेवल लेना है, ले लीजिए, but at least by then the child is 15 and 16. That's fine. The brain has changed. Yeah. The quality of processing has changed. Understanding has changed. लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? देखिए ना, look at the injustice of it. कि अगर क्लास 3 में 28 बच्चे हैं, और मैं अपनी ही मिसाल दूं ताकि कोई, मैं और क्यों दूसरी बात करूं, उसी क्लास 3 में मैं हूं और बाकी के 27 बच्चे हैं, तो उन 27 बच्चों ने कसूर किया हुआ है जो मेरे बैच में थे. अब किसी के फर्स्ट आने का चांस ही नहीं है. यानी क्लास 3 में there is no chance at all for anyone else coming first, because I'm a prodigy, I'm a genius, I always was. So therefore there was no competition with me with it. But why were the other children being punished? Because they were in the same class, because the exam system was so damn stupid. बस जी. तो if instead of that, अगर हम ये पूरे चक्कर से ही बाहर आए और सब बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दें, class 3 से class 4, all of them. By the way, last point, I know I'm full of this. Recent research by Professor John Hattie, लोग नाम नोट कर लें, John Hattie, लोग जो जानते हैं, इन्होंने visible learning का एक बहुत powerful metaphor दिया है. It's a very big subject and उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं. big subject. John Hattie ने visible learning में उन तमाम प्रैक्टिसेस की लिस्ट बनाई है जो सबसे ज्यादा बच्चों की जिंदगी पे लॉन्ग टर्म असर डालते हैं. एंड डू यू नो the worst thing that you can do to a child is to retain a child for a year. एक बच्चे को फेल करना और फेल करने के नतीजे में उसे कहना कि तू क्लास 4 रिपीट कर या क्लास 5 या 6, ये जख्म जो है ये जिंदगी भर जाता ही नहीं. लेकिन तो John Hattie has proved internationally by taking a look at the meta analysis of over खुदा मालूम 1.5 billion children around the planet that retaining a child is the worst thing you can do to a child in the name of an exam. तो ये तमाम सब जो मेरे सामने इश्यूज हैं वो बड़े सिंपल हैं. कमल साहिबा को मुबारक हो
जो रुब्रिक से पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, डॉक्टर शहजाद जीवा को मुबारक हो कि वो इम्तिहान का निजाम कर रहे हैं, बिकॉज के निजाम है। लेकिन ग्रेड्स 1 to 8, प्लीज बी वेरी क्लियर, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेड्स 1 to 8, आप अगर सिरे से इम्तिहान हटा दें, द लर्निंग विल बी डीपर, रिचर एंड बेटर। ये एक मेरा मारूजा है। जी डॉक्टर साहब। सर बिल्कुल, अभी एक मैसेज भी आया कि जापान में एग्जाम्स नहीं है, और अभी रिसेंटली आपको मालूम भी होगा इस्लामाबाद और पाकिस्तान में इसको क्लियर हुआ है कि एग्जाम्स खत्म कर दिए गए हैं 1 से 8 तक। तो उस पे बहुत बड़ा हाथ सर जीवा का है, और सारा डिसीजन। जी सर, ऐड कीजिए आप। कनाडा में भी नहीं है, स्टैंडर्ड 8 तक कोई एग्जाम नहीं है, एज के मुताबिक प्रमोट कर देते हैं, उम्र के हिसाब से। एक्सीलेंट। Yes, I agree with you 100%. बिल्कुल, बहुत I think it was very important points that were mentioned, and I completely agree that there shouldn't be testing or too much of testing. You know, at times one has to do it. For example, car license. If there's no testing, will you sit with that driver? You will not. If there's a medical doctor, will you sit with who doesn't have a license to practice? You won't go and get self-checked. Or for example, if there's a license, car license, and that is based on rank order, वो ranking बताता है driver की कि कितना अच्छा driver है। उस taxi driver के साथ Uber में you will never sit with them, if he stands 100th in the ranking. Sir, with due respect, for practical testing is okay, but in theory, I think Dr. Abbas said that it's very 100% very true. I'm coming to that, Janab. I'm coming to that. This is exactly where I'm coming. Where at a certain age, you have to do, even for teaching, you need to have certain kind of licensing before teacher enters the classroom. But when we are talking about very young children, then, those tests, those numbers, when we say 80%, what does 80% means? When we say my child got 13 out of 20, what does that mean? At times we hear, that mere bacche ko kuch nahi aata, my child doesn't know anything because they got 13 out of 20. And my question is, what if that same child had got 2 out of 20? What would your comment be? That my child doesn't know everything. So 13 out of 20 has to have certain meaning. What does it mean? So the entire approach, one is our testing at a very young age should not be there. Yes, there should be some sort of an assessment, a feedback system that has to be there. But what we are doing right now with so much testing and assessment at school, we are doing it very wrongly. We are measuring with a wrong tool, and the person who's using the tool doesn't know how to use the tool itself. Yeah. So the kind of feedback or information that parents are receiving, that how the child understands a certain curriculum is also not correct. The reliability of those judgments is wrong as well. There are some very good examples in Pakistan. For example, Habib Girls School. There you would see from class 1 to class 8, Abbas, you'll be very happy to know, and I'm sure you already know. I do. That from ECD till grade 8, there is only formative assessment. Only formative assessment. And that school is affiliated with our board. And I can proudly tell you that the students perform extremely well in our exams. Even they take positions in our exams across the country at national level.
So that is the power of formative assessment. When you talk about the confidence and self-esteem of these young girls, they stand out. You know, they have a very high self-esteem, these young girls. Like exactly what Abbas Saab said, when you fail a child, you kill their self-esteem. Terrible. Terrible. So that's unfortunately reality in our country and in most of the country globally. This is the system where there's no formative assessment, but it's all summative, and the numbers define a student's self-esteem. That's a very unfortunate approach in the country. And what Shumaila just informed, that in till 2019 in Punjab public sector, there was a system of pass and fail, system from grade 5 and grade 8. So they used to have grade 5, grade 8 examinations conducted by a Punjab Examination Commission. I happen to be a member of the commission as well as the chairman of the technical and academic committee there. And when I joined in 2019, I abolished the system of pass and fail in examinations in the primary and middle section of all public sector in Punjab. Right now, the policy of assessment that we gave, which is assessment policy framework, which was approved by the current Chief Minister of Punjab and is now implemented. So it has 3 arms. One is we are promoting school-based assessment, providing good quality questions at public sector so that teachers can use for assessment purpose in school, empowering schools. There is no pass and fail system. If a child is unable to perform well, they are not supposed to use the word called failed. Second is on large-scale sample-based school assessment. This is the purpose of this assessment, is to give feedback to the stakeholders how different regions or schools or different levels are performing. And the third is formative assessment. Here there is a huge task that a school needs to achieve. My approach was a bit different. I wanted them to go one step at a time, but anyhow, they had a big, mandate, and elections are coming as well. So one has to take everything. So everything can't be through feedback because if you want to make everything as a feedback approach, then you need to relook at your own curriculum. Our curriculum in Pakistan, unfortunately, there's too much content. And the subjects, the way it is being taught is not integrated. The subjects are not integrated with each other. Islamiyat is taught as Islamiyat, math is taught as math, general science is taught as general science. There is no link with each other with science and social science or math or science. So for them to have everything being covered through formative assessment, I think they face a huge challenge. But one way that I suggested to them is to have certain element, maybe 10% even of their entire academic year to be used using project-based learning, which can help students to deep dive in certain concepts which should be integrated with each other, the subjects. Anyhow, there is a long way to go, and people will learn with time, and hopefully improvement will take place. Same is the result in 2018. Balochistan used to have, or still has, Balochistan Assessment Examination Commission. Even they used to have pass and fail, and we stopped that, and we moved them towards large-scale sample-based assessment rather than going pass and fail. What was happening with those results and scores? There were certain what do you call it? With the pass and fail, or how well the school scores, there were certain prizes or remunerations were associated to it.
or incentive associated to it. Incentive. What happened if school failed or certain number of students failed in the exams, they would be penalized. The principal or the teachers would be penalized. And what that led to, that students of grade 8th and 5th were exposed to cheating. Just because schools wanted to perform well, they would help students to give the right answers in MCQs, especially in MCQs. It was very widespread. They used to have 4 MCQ versions of the exams for the students, and people would go in the classroom and would say, version A kiska hai? And students would raise hands and they would give answers to the students for version A, B, and C. I raised a question because I saw a very good response of students in MCQs, but in CRQs, students did not perform well. So we said, why do we need to go through these entire activities where you're making students to go through pass and fail, you're exposing children at a very young age and exposing them to a culture of cheating in schools. So these were the things that we had to abolish, and hopefully things will improve in the country. I hope Sindh and KP and hopefully Balochistan will also take heed and move in this direction. Thank you so much, sir. Inshallah, sir. That's great. Shumaila, do we need to conclude now? No more questions, right? मैं conclude कर दूं points? How can we improve this? जी, तो should I ask that question? Yes. जी, बल्कि आप very important question. Shumaila, go ahead, please. For this. जी. You want me to ask that primary or secondary पे तो हमने बात कर ली that okay, sir आपने जो भी बातें की I can conclude के it's not just right and wrong, it's not just pass and fail. ये सारी चीजें से बहुत intellectual level पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. And there are many questions that we have to look up to. Parents का क्या role है? जब हम कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो पेरेंट्स का कितना कोऑपरेशन होता है, क्योंकि सिस्टम सबने मिलके बनाया है तो उसको सभी को चेंज करना है. एंड कहानी सिर्फ इवैल्यूएशन की नहीं है जी, एग्जाम्स की नहीं है. इट स्टार्ट्स राइट देयर व्हेन वी आर टीचिंग, व्हेन वी आर प्लानिंग टू टीच. तो जब प्लानिंग टू टीच में ही प्रॉब्लम है तो जाहिर है इवैल्यूएशन भी डिफरेंट हो जाएगा और उसकी वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा. सो वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू. What steps to be taken? What 3 steps to be taken which can cause immediate change? Or you can say बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा सा सवाल है ये, but फिर भी if you want to 4 steps, 5 steps, so kindly end there. No, okay. Okay. I see Barkatullah Awan has raised his hand. Ji, Barkatullah, bolo. Sir, Assalamu alaikum. Sir, nice to see you here, sir. सर पेरेंटिंग का बहुत बड़ा इशू है आजकल, और ख़ास तौर पर ये जो वाईफाई और मोबाइल एडिक्शन है और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसमें पेरेंट्स परेशान भी होते हैं लेकिन वो किसी से काउंसलिंग नहीं करते और ना ही उसके ऑप्शन तलाश करते हैं. मैंने एक चीज़ शुरू की हुई है कि मैं अपने स्टूडेंट्स से छोटे छोटे सवाल सर्वेस करता रहता हूँ. उन सर्वेस से मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है और उसमें पॉजिटिवली स्पीकिंग मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स के अच्छे एरियाज उनकी डायरी पर और लिखकर 1 लाइनर, और उसमें मैं नीचे कमेंट्स दे देता हूँ क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स. फिर भी स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, नो फीडबैक सर इवन. जी, और ये जो ठीक है, I'll come to you. बरकत भाई, जो नंबर रेस है इस पे भी सर प्लीज गाइडलाइन चाहिए. जी मैं बात करता हूँ. दानिया अंसारी has raised her hand. Dania, go on. Assalamualaikum. Sir, first of all, nice to meet you all. My question is just the sir said about the cheating problem. So it's very common in government colleges and board also. I have been
the part of school and board exams in which we were allowed to open up our notes even. So how to ठीक है. solve this issue of government schools? Okay. अच्छा चलें. All right. ये तो ऐसी बात हुई ना कि मुझे सख्त सर्जरी की जरूरत थी और आपने वो ₹2 वाली सैनिप्लास लगा दी. तो सैनिप्लास के नतीजे में जख्म इलाज तो नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त तो थोड़ा सा राहत मिल गई. फिर उसके बाद मजीद मसला हुआ. तो फिर तो एग्जैक्टली चीटिंग का मसला हल करना सैनिप्लास लगाने के बराबर है. मसला मरीज को सर्जरी करने की जरूरत है. इट्स समवेयर एल्स. तो ओके, ये वी आर आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन. लेट मी क्विकली गेट टू द रियल क्वेश्चन. शुमाइला हैज आस्क्ड कि सर एजुकेशन में क्या किया जाए. तो मैं जो है ना वो टॉप यानी 3 आइटम्स जो की जाएं, मैं 2-3 और आपको लगेगा दे आर क्वाइट फनी, बट नो दे आर नॉट, और एटलीस्ट दे आर वेरी सिंपल. नंबर 1, तमाम स्कूल्स के स्टाफ रूम्स में अंग्रेजी अखबार लगवा लिया जाए. व्हाट? Get an English newspaper to be regularly subscribed in the staff rooms of every school, which means if it's a large school and there is a men's staff room and a women's staff room, or a primary or a secondary, then so many more newspapers, so many more copies. Why? Because I have found teachers themselves are not aware of the educational discussion happening in the English language. And by the way, the discussion in the English language is the only thought-provoking conversation there is. So get the English newspaper in every staff room. Number 2, begin classroom libraries. All classrooms should have a set of books donated by the students. Ask the students to bring the books from home, 2 or 3 or 4, and say put them and your friends will benefit. And there will be multiple copies of the same book. Put them in the next room. I'm not talking about expense, but only when the children read will they be out of the terrible, terrible problem of the smartphone and the leakages of attention through doom scrolling and all of that. एक बड़ा subject है, मैं उसमें नहीं जा रहा, बस अभी के लिए read. Number 2, यानी पहले अखबार लगा दो टीचर्स के कमरों में. नंबर 2, क्लासरूम के अंदर में किताबें और लाइब्रेरीज का इंतजाम करो ताकि बुक्स का एक कल्चर क्रिएट हो. एंड नंबर 3, लेट ऑल स्कूल्स टेक अ डिसीजन. अभी हमने ऑलरेडी देखा कि केपीके वगैरह अप टू क्लास 8 बच्चों को यह समझाया जाए that the fruits of cooperation are far greater than the prize of competition. मैं फल के बगैर जिंदगी नहीं जी सकता, इनाम जीते बगैर जरूर जिंदगी जी लेता हूं. तो इनाम है कंपटीशन का नतीजा, फल है कोऑपरेशन का. सो बच्चों को कुछ ऐसे काम जरूर करवाएं जिन्हें टीम बिल्डिंग, टीम एफर्ट के जरिए एक खुशी का महसूस हो. When they recognize how when we do things together, we achieve something rather than only giving exams individually and isolated and only saying, I am good. So iska main ek amali baat ye bata दूं. Let our classroom be places where if Qasim gets 100 out of 100 in maths and Abdullah gets 35 in maths, we say to Qasim, we will clap for you the day Abdullah gets 75 marks through your effort. यानी जब हम कासिम से कहेंगे कि तुम उस दिन हमारी नजरों में इज्जत के लायक होंगे, ये नहीं कि तुम 100 out of 100 ले रहे हो, तो कमाल की बात है, तो अल्लाह ताला की देन है. क्या तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा साथी, तुम्हारा क्लास फेलो अब्दुल्ला जो स्ट्रगल कर रहा है फॉर एनी रीजन, क्या तुम उसको हाथ बढ़ा के ऊपर ला सकते हो? उस दिन हम अब्दुल्ला के लिए भी तालियां बजाएंगे और तुम्हारे लिए भी तालियां बजाएंगे. To foster a culture where the children raise each other rather than pull each other down. Do these 3 things: the staff room, the classroom, and cooperation. We've done it. Thank you. Thank you so much, sir.
Thank you so much, sir. So Dr. first Jeeva? we will have to implement reading culture. Yes, sir, Jeeva. So, while Abbas have mentioned three very critical things, two of them were more on the logistics side. I'll just talk on the three academic side. One is, we've already discussed that at an early level, there has to be a formative assessment of psychomotor skills, in a very right approach that it should, because in Pakistan, we've got multiple private sector schools. We've got 22 million children who are being catered through private sector schools. So I think for that, any new system, maybe a formative approach we should bring in, there has to be a sort of standardization in a way that the assessment of the student measured in one school as compared to another school should be close to each other rather than vary a lot. Second would be is the language issue. In our country, most of the children come from middle low income group where parents are less educated or they're not educated. They don't speak English at home. But the aspiration of the parents is that we'll send our children to an English medium school so that they can prosper. Of course, we all know that if you learn English language, there is, a gateway for eliminating the poverty. So language is an issue that if we want to send our children to English medium school, I think there should be a democracy. One should have the right to choose what they want rather than government imposing upon that it should be only Urdu medium school, just because most of the children of the country comes from the rural side. So we would like urban side to also go through Urdu medium. I think that is something we need to be very careful on that. So the kind of books that we are having for our children is also something, a huge challenge that I see. Books are not compelling students to enjoy the learning process. The current assessment system, as I said, it's just killing away the joy of learning of the students. This third one is the multiple approaches towards pedagogy as well as learning approach. We've got usually in the classroom that we see is talk and chalk style, didactic teaching. I think what Abbas Saab mentioned, what Kawal Sahiba mentioned is that, and I think other members of the group who are attending this conference also agrees that teaching should be, or learning should be a process of joy for students. Having a didactic approach would kill the joy of learning, where only teacher is talking. We are not asking the question why. If it is wrong, why do you think it is wrong? If it is right, why do you think it is right? Is not being asked. The right answer is given by the teacher, and the wrong answer, the reasoning is never given to a child. So I'm a very strong proponent of introducing project-based learning, inquiry-based learning approach, along with, you can't get rid of everything, along with the current approach in the teaching. Even if you give 20% of your time, of teaching time towards project-based learning or inquiry-based learning, it can make a huge difference in students, the process of learning. Because once you have a very strong approach towards, for example, project-based learning, where you learn about life itself, which is connected to different concepts, you not only involve a child into the learning process, but also the parents of the child. They also get involved in the process of learning. Usually what you see, the parents are involved into whether the child went to school or did not go to school, whether teacher came or did not came, did they had a test or not, what kind of marks they got.
this is only where they are involved into what, which I say, they are being only a watch guard, जो हम चौकीदारी कहते हैं, जिससे वो बच्चों की सिर्फ चौकीदारी करे, they are not involved in the process of learning. So I think from my side, these are the three things. One is formative assessment should be a part of it. Language should be looked into. If you want to have English language, then please teach proper English language. Or if you want to teach Urdu, please teach proper Urdu language. We are not teaching language, we are teaching them literature in schools for both English and Urdu. And there should be a multiple approach towards pedagogy and learning. Thank you. Thank you so much, Dr. Jiva. Yes, Ms. Kamal, would you like to add something here? Thank you, Ira. ज़्यादातर points अब्बास साहब ने और जीवा साहब ने cover कर दिए हैं. What I want to add here is that definitely we have to revisit our teaching practices. Integration of subjects is very important. As Dr. Jiva has mentioned, that project-based learning is one of the way through which we can make students think critically. We can make students solve the problems. We can make students to think in a different manner. So integration is very important. Again, for that we need to, मैं बात करूँगी particularly grade 1 to 8 के schools के लिए कि first we have to make sure कि जी हमारे पास जो faculty है, they are equipped enough to handle formative assessments and integration of different subjects. Unfortunately, हमारे पास जो schools हैं, private sectors में भी schools हैं, and many of the schools जो आप सब जानते हैं गली मोहल्ले में छोटे छोटे schools हैं, teachers are not trained enough. जो teacher licensing की बात हुई थी, we should encourage teachers licensing before we are hiring any teacher. तो हम उसकी licensing पे जो है वो करें. तो सबसे पहले तो teaching process को बेहतर करना है. तो दूसरी चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना है. अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल्स में, चाहे वो आप बड़े नामों की बात करें चाहे छोटे नामों की बात करें, पेरेंट्स आर जस्ट क्लाइंट, दे आर नॉट द सपोर्ट एनीमोर. तो जब तक हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे इन टू टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस, इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो वो बेटरमेंट नहीं आएगी. तो पेरेंट्स काउंसलिंग शुड बी the part of school processes, कि जिसके अंदर वो टाइम टू टाइम पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ बात करें, then we can improve our students. और फिर वही वाली बात है कि टेस्टिंग में नंबर्स में बच्चों को ना लगाएं. आगे जाकर ultimately they have to sit in that. Unfortunately or fortunately they have to. But the time they are here with us in our schools, उनको numbers के पीछे ना लगाया जाए. उनको collaboration, उनको cooperation, उनके communication, उनकी leadership को बढ़ाया जाए. This is what I want to say. Thank you so much, Ms. Kamal. And what I have learned through this panel discussion is that awareness at all levels is required. If I'm a parent, I need to aware myself, I need to get upskilled, और मुझे जानने की जरूरत है कि मेरे बच्चे को क्या कैसे पढ़ाया जा रहा है. If I'm a school owner, जाती है ना तो ये मेरी हर बात पे टोकती है. Sorry, someone was saying something. तो अगर मैं एक स्कूल ओनर हूँ तो भी मुझे, अब अगर मैं एजुकेशनिस्ट नहीं भी हूँ बट स्कूल ओनर हूँ, तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि मेरा स्कूल किस तरह से रन किया जा रहा है. अगर मैं एक प्रिंसिपल हूँ तो फिर जाहिर है मैं एजुकेशनिस्ट ही हूँ, एंड आई हैव टू बी अवेयर. एंड इफ आई एम अ टीचर, ऑफ कोर्स आई हैव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपस्किल माई सेल्फ. अगर स्कूल मेरे लिए इंतजाम करता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं भी करता तो नाउ द वर्ल्ड इज ओपन, वी आर एक्सपोज टू अ ग्लोबल फ्रेटर्निटी. अब हमें जरूरत नहीं है कि हम कहीं जाएं आए, और वी कैन अपस्किल आवरसेल्व्स जितने आसानी से. अब तो जितना आसान हो गया, कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा. तो इसका छोटा सा हल जो मुझे नजर आता है वो यही है कि हर कोई अगर अपनी जिम्मेदारी ले ले और अपने एंड पे जो काम है वो कर ले, तो इंशाल्लाह थिंग्स विल चेंज. ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बदल पाएंगी. Thank you so much, all the distinguished guests over here. Thank you so much all. Time is up. Yes, Ms. Rubina Asif. Yes, if you allow me, I want to ask a question. Yes, yes. Sir, I want to add something.
अब्बास साहब की जो बात है माशाल्लाह उसको मैं विद ड्यू अपोलॉजी में एग्री नहीं करता जो इन्होंने कहा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग तमाम टीचर्स को ज्यादा, मैं तो समझ रहा हूँ कि ब्लेम किया जा रहा है कि दे डोंट नो हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स। अब आप जैसे कह रहे हैं कि हर आदमी अपना रोल प्ले करेगा, देन व्हाई इज द स्कूल। अब सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रेज हुआ है जो इतनी सारी डिस्कशन के बाद कि आप इवेल्युएशन की बात करते हैं, तो मैंने अपने ये नोट में भी लिखा हुआ है पहले से ही कि इवेल्युएशन किसका, स्टूडेंट्स का या टीचर्स का। अगर टीचर की इवेल्युएशन नहीं होती इन द बिगिनिंग टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन, तो फिर वो टीचर नहीं है। आपके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा ना उसके एवेल्युएशन का। अब आप टीचर को बताना चाह रहे हैं कि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़े और इसकी बुनियाद पर वो डिस्कशन करना सीखेगा, तो आई थिंक ही इज नॉट अ टीचर। He should learn in advance before joining the job, before he is starting his profession. He must know all these, what Abbas has said and what Jiva Sahab has said. मैं तो कह रहा हूँ कि उस्ताद की इसका मतलब कल्टीवेशन चाहिए, उस्ताद की समझ लीजिए ग्रूमिंग चाहिए, उस्ताद को ट्रेनिंग चाहिए ताकि वो इसी तरह से बच्चों को हैंडल कर सकें। अब देखिए आप टीचर पेरेंट, बिल्कुल टीचर पेरेंट रिलेशनशिप जरूरी है, कोई शक नहीं है। मेरे 4 बच्चे थे और मैं स्कूल में हर थर्सडे को पेरेंट डे होता था। मैं सऊदी अरब में काफी अरसे से रहा, फिर कनाडा आ गया, यहाँ भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। लेकिन जीवा साहब ने जो 3 चीजें बताई हैं उससे विद ड्यू अपॉलॉजी आई डोंट एग्री। क्या आप उनको अखबार पढ़ा के सिखाना चाहते हैं टीचर को? इट मीन्स टीचर इज नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग। अगर वो अखबार पढ़ के सीखना जा सकता है तो हर आम आदमी अखबार पढ़ के टीचर बन जाएगा। नंबर 2, बुक कल्चर अब खत्म हो गया। अब आपकी वेबसाइट पे हर चीज अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू एवरीथिंग। अगर पेरेंट्स प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को देखना चाहते हैं तो वो वेबसाइट पे जाके बच्चों को सब कुछ बता सकते हैं। बुक का कल्चर हमारे दौर में था, हमारे से पहले के दौर में था, अब बुक कल्चर भी नहीं रहा। तीसरा, इन्होंने कहा अब्बास साहब ने कि एक बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स आए और एक के 35 आए तो 100 वाले को उस वक्त क्लैप करेंगे जब 35 वाले को वो हेल्प करके वो एटलीस्ट 75 पर ले आएगा। व्हाई दिस इज हिज ड्यूटी? व्हाई नॉट दिस इज ड्यूटी ऑफ द टीचर? व्हाई दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ट्यूटर? देखिए ये मैं तो कहूंगा कि वो लड़का जिसको हम कह रहे हैं कि तुमने 100 नंबर लिए, वो 25 वाले को 75 ले आओ, उस पर मेहनत करो, तो वो कहेगा क्यों भाई मैं टीचर तो नहीं हूँ, मेरे पास दूसरा भी तो काम करने का है ना। व्हाई शुड डू दैट? आप जरा इस बारे में सोचें। और उसके पेरेंट्स जिसने 100 में से 100 लिए, उसके पेरेंट्स भी फेड अप होंगे कि भाई उस बच्चे को क्यों ट्रेन करना चाह रहा है। आप देखिए स्कूल में, मैं सच्ची बात बताता हूँ, एक बहुत बड़े जनरल कर्नल आए थे सऊदी अरब के स्कूल में, वो अपने आप को फौजी कह रहे थे और पहली ही फुर्सत में हेडिंग अखबार में डाल दी कि यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन दिलाना एक फैशन बन गया है सऊदी अरब में। मैं फौरन उन्होंने अपनी आर्मी की मिलिट्री की वर्दी में फोटो छपवाई। I went home immediately. Next day I was with him. I said, what did you do this? You are new principal here. You cannot impress people with your uniform. If you are an army man, you should do all the things in army, in military. Here all are civilians. आप क्या कह रहे हैं फैशन बन गया है? फैशन नहीं बना। आपका टीचर हर बच्चे को कहता है कि बेटा आप इसमें कमजोर हो, आप ट्यूशन ले लो, और बैकडोर से फिर वही आदमी उस बच्चे को ट्यूशन देना चाहता है और उससे 500 रियाल एक सब्जेक्ट के एंटना चाहता है। Can you imagine? ये रेलेवेंट नहीं है। थैंक यू तैयब मूसा साहब। यस सर, बात कहीं और चली जाएगी, हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। लेट मी जस्ट गिव वन सेंटेंस। मैं तो बात आपके 3 सब्जेक्ट थे ना उसकी बात कर रहा हूँ, उसके बारे में जो मैंने डिफाइन किया है आप बताएं। सर मैं क्लैरिफाई कर दूं, यू मिसअंडरस्टूड, यू क्लैरिफाई। सर इट्स ओके, आप माशाल्लाह सऊदीया में रहे, कनाडा में रहे, और माशाल्लाह दैट्स ग्रेट, नो इशू। सर मैं 85,000 टीचर्स को रीच कर चुका हूं पिछले 25 साल में, और मेरा मसला अंग्रेजी अखबार पढ़ के डिस्कशन सीखना नहीं था, अंग्रेजी के साथ एक राब्ता था। मेरे बहुत सारे टीचर्स सैडली इस राब्ते से मुनक़ता हैं, दैट्स ओनली अ मेटाफर, एक मिसाल है, पॉइंट टेकन। बाकी सर मेरा मसला ये नहीं था कि एक बच्चे को सजा दी जा रही दूसरे बच्चे को, एग्जैक्टली यानी जो बात आप कह रहे हैं एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि जिस बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं वो जिस बच्चे के 100 मार्क्स आते हैं, क्या
periodically. Please excuse me. Kindly mute my yes. Yeah, okay. Tayyib Sahab, it's okay. It's a big subject. But my whole point is कि competition के नतीजे में हमने बच्चे को एक दूसरे के खिलाफ और दुश्मनी में डाल दिया. उसका नतीजा हमने कल्चर में देख लिया. और कोऑपरेशन के नतीजे में लोग जब मिलजुल कर काम करते हैं, ये तो एक एग्जाम्पल था. ये आप ना करें. मेरा मसला किसी बच्चे को सजा देना नहीं है. बट जो लार्जर पॉइंट है वो ये है कि क्लासरूम के अंदर में कोऑपरेशन का कल्चर फॉस्टर किया जाए, न कि नफरतों का और एक दूसरे के टांग खींचने का, जो कि सैडली एक रियलिटी है हमारे तरफ में. बाकी आई अप्रिशिएट सर जो आप कह रहे हैं, इट इज ट्रू एंड आई एम इन द सेम फील्ड एज. बट सर सैडली पाकिस्तान की बात बता दूं, मिडिल इनकम स्कूल्स के अंदर में आपकी बात के माँ बाप वेबसाइट पे देख लें, ये तो ऐसी बात है कि स्विमिंग पूल में 3 इंच का पानी हो तो स्विमिंग की बात नहीं की जा सकती. सर यहाँ पर गुर्बत के नतीजे में माँ बाप के पास एक्सेस नहीं है टू द इंटरनेट, जो बातें आप कर रहे हैं, विच इज ट्रू. सो इट्स ओके, ये होगा नहीं मसला हल. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ रिस्पॉन्स टू अ जनरोसिटी ऑफ हार्ट एंड अ जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. बस ये है तो हमारा मुआशरा चलेगा. Thank you. I agree with Abbas Saab, and what he meant was, and I also wrote, is inculcating the culture of teamwork in the classroom, collaboration in the classroom. Right. What is happening right now in Pakistan, my children also go to schools, and it is all about competition. Who came first? Who cares who comes first? So basically, even for my children, and I'm very glad to see my daughter is, if she's good in math or in English literature, I see her supporting other students. And that is the kind of culture that we need to build in the classroom. Teachers, we are not blaming teachers as such. Teachers are under huge pressure, immense pressure, because they have to complete a certain course in a certain period of time, just like what we were showing students wearing those hats and we are writing working as a robots. Unfortunately, our system is also pushing teachers to work like robots as well. So because we were talking in terms of the context of testing and evaluation of students, that's why the entire conversation remained there. But I think if we can bring as a next part of your Shumaila, your conference on teachers, I think we can discuss more in detail on those sides and have a kind of a reflection of what is the overall situation in the country and what needs to be done. So your points, Musaid Sahab, is also well taken as well. Okay, ये international virtual seminar है, but मैंने पैनल डिस्कशन अपने नेशनल लोगों के लिए इसीलिए था कि हमारा अपना कल्चर, अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज हैं, और हम काफी अरसे से उसी कल्चर के अंदर रह के इवैल्यूएशन प्रोसेस हो, पेरेंटिंग हो, टीचिंग मेथोडोलॉजी हो, पेडागोजी हो, वो हमारी कल्चर के अंदर रह के सारे काम हो रहे हैं ना. अगर हम इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्डाइज और उससे कंपैरिजन करें कि वहां पे ये नहीं होता, ये यहाँ पे होता है, हमारा तो जो अपना एक कल्चर चल रहा है, जो अब जो पेरेंट बने जिनके हम सारी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस जरूरी है, तो वो 20 इयर्स पहले वो कुछ सीख चुके हैं जो अब अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक टाइम टू टाइम चला आ रहा है. तो इसलिए हमें अपने कल्चर में रहते हुए उसको ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं कि उस डॉन के न्यूज़पेपर का क्या एक पर्पस हो सकता है. अब हम इस किसी और कल्चर में ये बात शायद ना करें, ये हमारे कल्चर में अप्लाई होती है, तो ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम अपने ही नॉर्म्स एंड वैल्यूज और अपने ही नेशन के अंदर, अपने ही कल्चर, अपनी ही कंट्री के अंदर रह के बात करेंगे और उसी को इम्प्रूवमेंट की भी बात करेंगे. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जरूर लेंगे. इंटरनेशनल जाहिर है, मैंने इसीलिए जो स्पीकर्स हैं उनको इनवाइट किया था कि हम उनके साथ रह के उनके स्टैंडर्ड को फॉलो तो करेंगे, बट अपने हमारे कल्चर के अंदर अभी बहुत सारी लैकिंग है जिनको हमें इम्प्रूव करना है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट सर. Shumaila, I think should we need to conclude close now? Yes, please conclude. Because the next Dr. speaker Clarence is waiting. Peter. Yes, I'm so sorry, sir. So sorry. I personally apologize. Time is, oh my God, too over. Yes, Ms. Ram.
kindly जी, conclude. Shumaila, Mr. Peter is there. He wants to say anything. जी जी, उनका comment. सर अब्बास अगर परमिशन दें सर जीवा तो हम ले लें. Okay, Sir we'll Abbas. take one comment. Please, लीजिएगा. Dr. Yes, Clarence, sir. please Dr. go on. Clarence Peter, director of Nepal School of Thought, I think. Yeah, Yes, yeah, stop. Dr. Stop. Let him speak. जी. Yes, sir. Dr. Clarence Peter. Good evening to all learned personalities of education here. Thank you. मैं अब्बास जी और तैयब जी और जीवा जी और जितने भी लर्नर्स हैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि उम्र से मैं स्वीट 16 हूँ with 50 years of experience. मैं सुमेला मैम को भी बताता रहा. जहां तक हमारे कंट्री की बात है, whereas India is concerned, I may prove to be insane. Please excuse me in my comments. I repeat the word insane. Somebody said that let school not interfere in education. Yeah. Let school not interfere in education. My personal experience, let us get away with examination. Who are we to assess? You may call me insane, please. I'm prepared to take it. But I have my opinion, and I hope all of you will respect, as I respected each one's opinion. So, हमारे गुरुकुल के ज़माने में क्या था? मैं आज हम लोग कर क्या रहे हैं? हमारे बच्चे आज हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर पीटर, प्लीज टेल अस all those new things which is not there in the website, on the internet. ये जो आप बता रहे हो ना, excuse me, I am also from the English department, अब्बास साहब. जनाब. आपने जो कहा 200% मैं आपके साथ हूँ. Okay. English is a must. Yes. English is a must. हमारी भाषा नहीं है. हमारे हिंदुस्तान में भी इंग्लिश भाषा okay. Not ना ही मेरा नाम पीटर है तो मेरा भाषा इंग्लिश है, नहीं. मैं बिहार का रहने वाला हूं, ठेठ भोजपुरी बोलता हूं. बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि who are we to assess them? गुरुकुल के जमाने में वैल्यू सिस्टम्स की बात होती थी. Let us assess them on, give them internal assessment, day to day assessment. वो कर क्या रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम्स उनकी क्या है. रहा फिजिक्स केमिस्ट्री की, what will that going to do? That will give you a job. लेकिन जॉब मिलने के बाद, I don't know if you'll agree with me, जॉब मिलने के बाद जॉब में बना रहना है. कोई साइंस बताता है, फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी में बताएगा कि जॉब में, कॉम्पिटिटिव जॉब में जहां मैं रहता हूं 100 लोगों के बीच में, वहां बना कैसे रहूं, बना के कैसे रखूं जॉब को? I don't think there's any science which tells us. It's life and living. It's life and living. Thank you, sir. Right. Shumaila ji, thank you so much, sir. Yes, thanks we a lot. need to be on our way. We've had a long day. Thank you. Yes, sir. Sir Peter, you don't know about our Sindh culture and Sindh education. I think no, a lot. Okay. It's a big question. Anyways, yes, Ms. Iram, conclude. I would just conclude by paying thanks to all the distinguished guests here, Sir Abbas Hussain, Dr. Jiva, and Ms. Kamal Fawad. What a conversation, what a discussion. We are leaving behind so many questions. It's still to be addressed in the next seminars, inshallah. Thank you so much, everyone. Take care. Thank you. Thank you, people. Thank you. Thank you so much, Sir Abbas, Sir Jiva, Ms. Kamal. Thank you. Yes, Ms. Kamal, do you want to say something? Okay. Just question answer session is over or the seminar is over? No, sir. We will move to our next speaker, Ms. Shaheena Hussain. Yes, Ms. Nazi Shahbaz. All right. So finally, the panel discussion has over. And it took very much time. Yes. Yes. And वही वाली बात है नाजिया, जब कुछ इस तरह होता है टाइम का पता नहीं चलता. Exactly. और लगता है कि अभी और बात है, अभी और वो जो एक वर्ड कहते हैं ना कि पूरी तशफ़ी हासिल नहीं हुई, तो टीचर का काम होता है ना प्यास को जारी रखना, प्यासा रखना स्टूडेंट को, ताकि उसकी तशफ़ी ना हो और इल्म प्यास को बढ़ाता रहे ये इल्म. तो वही
हम सब में होना चाहिए इस सेमिनार के बाद भी ना. Yes. Bilkul. So let's move towards the upcoming guest. I guess she has joined us, Shaheena Hussain. Yes, All I'm right. here. Oh, that's Assalamu great. alaikum. Walaikum assalam. Let me give your short introduction first. Yes. All right. So now our guest is Shaheena Hussain, as I already have shared with you, and she is founder and director Edupreneurial Set. She is teacher trainer, guest speaker, author, also item reviewer, member of social studies curriculum development team, executive committee member of ASSET, and editor of ASSET newsletters as well. So I'd like to welcome her. Now over to you, Shaheena Hussain. Thank you, Nazia. Thank you, Educationists of Pakistan, for providing me another opportunity to learn with international speakers and to share my views, little learning with you all. Today we are here to discuss